तो स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। और गेस व्हाट इसरो लाइव आ चुका है। मैंने अभी देखा, उसके बाद ये स्ट्रीम शुरू कर हम दी। सब होंगे आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के ओके सो श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 17 सेकंड पर LVM3 M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TC शार 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। तो वेलकम एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे होंगे। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. तो जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो स्वागत है आप सभी का रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल पर। आप We are देख पा about रहे 31 होंगे minutes from the LVM3 scheduled launch M4 time. चंद्रयान You're watching 3 this मिशन live from the Mission आपके Control स्क्रीन Center. पर। Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. इससे पूर्व इसी वर्ष हमने चंद्रयान 3 मिशन को जो लॉन्च करने आपको वाला है ज्ञात हो, LVM3, चंद्रयान 1 इस 22 अक्टूबर रॉकेट का इससे पूर्व 2008 इसी को वर्ष हमने PSLV प्रयोग किया था। द्वारा दरअसल प्रक्षेपित किया गया था हमने इस और 8 नवंबर व्हीकल के 2008 द्वारा को चंद्रमा LVM3 की कक्षा व्हीकल के में द्वारा जाने में सफल रहा था 26 और मार्च अपने मिशन का उद्देश्य पूरा 2023 किया, को जिसमें चंद्रमा पर पानी की वनवेव खोज के भी 36 शामिल है। उपग्रह को छोड़ा फिर था 29 और अगस्त आज 2009 यानी में 14 जुलाई चंद्रयान 1 से 2023 हमारा को संपर्क दोपहर किसी 2 कारणवश बजकर टूट 35 गया, मिनट और लेकिन 17 इसमें सेकंड मील के पर पत्थर हम ने चंद्रयान चंद्रयान 2 का 3 मार्ग एक प्रशस्त किया था। हमारे चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के लूनर साथ चंद्रमा की सतह लैंडर पर को उतरने के छोड़ने लिए जा रहे हैं। लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। तो आप देख पा रहे होंगे LVM3 M4 मिशन आपके स्क्रीन पर। आपको संक्षिप्त में LVM3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर
28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। आप इस समय ये जो वीआईपी गैलरी है वो देख रहे थे, और ये LVM3 लॉन्च व्हीकल का एक साइड व्यू, आप As we खूबसूरत await the बादल देख launch, पा रहे let होंगे। me tell the viewers आज about दरअसल flight दोपहर events 2:35 for और 17 सेकंड के LVM3 तत्पश्चात M4 Chandrayaan 3 ये mission. यान अपनी At 30, सफलतापूर्वक the उड़ान twin भरेगा S200 और will be क्रायोजेनिक इंजन ignited अपनी and the सफलता mighty की कहानी LVM3 rocket खुद ही lifts कहेगा। off. आप देख पा The रहे होंगे core ये एक L110 फ्लाइट stage is सीक्वेंस, airlift नॉमिनल फ्लाइट सीक्वेंस है 108 seconds हमारे into the इस flight, मिशन के while the लिए। rocket is at an S200 altitude बूस्टर्स का of प्रज्वलन 45 किया जाएगा kilometers. लगभग The S200 0.452 strap-ons इनिशियल and वेलोसिटी पर, और L110 will जो thrust वेलोसिटी together for the होगी या next जो 20 एल्टीट्यूड होगा वो seconds. 0 होगा, और Thereafter, the फिर धीरे धीरे strap-ons कर will कर separate जो at हमारे L110 127 स्टेज है seconds 110 past सेकंड पर launch time, 108 सेकंड पर उसको while the प्रज्वलित किया rocket is जाएगा, at और 62 उसके kilometers 20 सेकंड altitude. बाद यानी लगभग The 127 relative या velocity 128 gained सेकंड by the पर rocket दो in the meantime S200 is बूस्टर्स को पृथक कर 1.59 kilometers per L110 second. स्टेज आगे निकल जाएगा हमारे इस At an पूरे यान को altitude of लेकर। 71 उसके बाद kilometers, लगभग closed loop 193 सेकंड guidance पर is जो हमारा initiated पेलोड फेयरिंग for या PLF LVM3. है उसका सेपरेशन किया जाएगा, Separation of और payload प्रज्वलन fairing के takes लगभग place at 305 सेकंड 195 बाद seconds past L110 the स्टेज को launch शट at ऑफ an यानी बंद altitude कर of दिया जाएगा। 115 उसके बाद kilometers. C-25 यानी जो The क्रायोजेनिक core स्टेरर है उसको 110 प्रज्वलित किया stage, जाएगा 307 having सेकंड पर, completed its और burn time लगभग of about 200 seconds, is लगभग separated from the 954 ongoing सेकंड पर rocket. C-25 को This शट ऑफ कर event दिया takes जाएगा place at लिफ्ट ऑफ से, 306 और लगभग seconds into the flight. सैटेलाइट सेपरेशन या At this point स्पेसक्राफ्ट of सेपरेशन time, किया the जाएगा altitude will be 969 175 सेकंड पर। kilometers आप and the आपके rocket स्क्रीन would have पर acquired राजराजन सर, 4.2 kilometers सोमनाथ per सर second और relative velocity. रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर इस समय Then आपके the upper स्क्रीन पर। cryogenic stage उसके साथ C-25 ये ignites जो 2 seconds व्हीकल later है and ये आपके continues to स्क्रीन burn पर for close आप to देख पा रहे होंगे क्लाउड्स कितने 650 साफ seconds. क्लियर है, काफी During the सफल operational प्रक्षेपण होगा regime of सतीश धवन से। C-25, the largest relative velocity addition takes place. दरअसल It आज increases from यह मिशन 4.178 बड़ा kilometers रहने per जा रहा है second to इस हमारे 9.804 kilometers per चंद्रयान second. सीरीज के And the most मिशनों के awaited लिए। moment of the दरअसल Chandrayaan 3 आज separation is scheduled to take काफी place at बड़ा दिन है, काफी 969.7 महत्वपूर्ण seconds दिन into है the flight. हमारे लिए। The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then आज on, the 14 जुलाई mooncraft Chandrayaan 3 would 2023 commence एक its journey to महत्वपूर्ण the moon. दिवस है। हम सभी ने इसरो के अनेक इस मिशन मिशनों का के बारे में काउंटडाउन देखा, सुना 25 घंटे और पूर्व जाना शुरू हो है। चुका है। चंद्रयान और इस 1 से दौरान शुरू रॉकेट करते तथा हुए अंतरिक्षयान को पावर ऑन मंगलयान कर 2 सभी और तंत्रों अब की स्वास्थ्य जांच चंद्रयान की जा 3 रही तक। है। आज इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान इस 3 दौरान का प्रमोशन L110 सतीश चरण धवन अंतरिक्ष केंद्र तथा शार क्रायोजेनिक चरण श्रीहरिकोटा के पर द्वितीय ईंधन का प्रमोशन मंच भराव से किया सुनिश्चित जा किया रहा जा है। चुका है। इसके साथ यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर इसरो के पूर्ण तकनीकी शौचालय प्रदर्शन तकनीक मिशनों से की श्रेणी में पूर्ण सुरक्षा एक के नवीन साथ अध्याय शुरू संपूर्ण होने किया जा जाता रहा है। है। आज 14 जुलाई 2023 को GSLV आप अभी अपनी MK3 स्क्रीन यानी पर LVM3 यहाँ अपनी 7वीं व्यूअर्स उड़ान गैलरी भरने का के लिए सज्ज है। दृश्य देख रहे इस हैं यान की पहली उड़ान और 18 दिसंबर भारी संख्या में 2014 यहाँ को लोग उपस्थित LVM3 हुए एक्सकेर हैं मिशन के साथ हुई थी। इस रोमांचक दृश्य फिर को इस देखने यान के की लिए। पहली विकासशील उड़ान ने मौसम GSLV विभाग Mark के 3 अनुसार यानी मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस D1 प्रमोशन ने के लिए। GSAT 19 उपग्रह को और 5 जून 2017 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था। इसके बाद 14 नवंबर 2017 को GSAT 29 और 22 जुलाई आपके सामने 2019 को प्रस्तुत है भारत का गौरवशाली मिशन LVM3 चंद्रयान 2 को इंटीग्रेशन छोड़ा वीडियो। था। दरअसल 22 अक्टूबर 2022 को OneWeb के 36 उपग्रह छोड़े थे और फिर से We 26 bring to मार्च you a 2023 small को clipping of the OneWeb के integration 36 संचार video उपग्रह for the छोड़े थे। LVM3 और ये rocket. कर्टन रेजर वीडियो आपके स्क्रीन पर इस समय -25 minutes. -29 On मिनट। your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle Oh. assembly building, where the full LVM3 M4 rocket has been assembled. These ये are एक- the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. ओके, तो Each ये S200 has got 3 इंटीग्रेशन वीडियो segments है। called nozzle end segment, middle segment, and head end segment, to which the ओके, nozzle सुमित is खरात, वेलकम assembled, वेलकम भाई, स्वागत है आपका। कैसे हो and बताओ one जरा after कमेंट the other, the segments are joined together.
When the तो ये fully assembled solid S200 rocket बूस्टर्स booster कैसे is बनते हैं वो सब दिखाया जा रहा handled है। carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. दरअसल इस On your घड़ी TV का हम screens, इंतजार it is लगभग 3 the साल से code कर रहे थे और L110 अब जाकर ये stage घड़ी आ ही चुकी है जब being brought to the LVM3 second यानी vehicle assembly हमारा building चंद्रयान 3 for मिशन का tilting प्रक्षेपण सतीश धवन से किया जा and रहा है। assembly between the सुमित S200 खरात कैसे हो, boosters. स्वागत है आपका भाई, वेलकम भाई, जरा कमेंट में बताना कैसे हो जी आप? हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC और आप देख पा रहे होंगे ये प्रपल्शन मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का। इस सोलर समय आपके पैनल्स लगे स्क्रीन हुए पर हैं। ये सौर पट्टिकाएं जो होती है 440 सोलर न्यूटन की पैनल्स, थ्रस्टर्स हैं। उनको भी टेस्ट किया जाता है इस पर, और ये बेसिकली अब अटैच कर रहे हैं। और ये रैंप है जो चंद्रयान 3 यहाँ आप पर देख लगाया रहे हैं जाता है लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण दरअसल करेगा। ये रोवर लगभग 26 से लेकर 27 किलो का है। ये रोवर की पूरी सारी जांच के सावधानी के साथ तत्पश्चात इसे इसको फिर संयोजित से कर दिया जाता है बंद कर दिया जाता है, संलग्न कर और दिया यह जाता है। लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ, अब ये लैंडर मॉड्यूल अब इस इस लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन को मॉड्यूल के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ अटैच संयोजित कर कर दिया जा रहा है। इसे हीट शील्ड यानी ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता है। सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे पेलोड एडेप्टर, ये हीट अंतरिक्ष शील्ड यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा और है अब इस पूरे और क्रेन की व्हीकल मदद को से इसे क्रेन की क्रायो मदद से स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद अब धीरे धीरे इसका रोल आउट है वो किया जाता है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग LVM3 से। रॉकेट LVM3 बिल्डिंग से M4 निकलकर रॉकेट अब लॉन्च पैड अपने की ओर जा रहा है। लॉन्च पैड के लिए इसे सज्ज है। मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। और आप देख पा रहे होंगे ये रॉकेट सीधा अपने लॉन्च पैड पर जाता हुआ अपने इस ट्रैक्स के थ्रू, और इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड पूर्ण ले आया गया है परीक्षित ये यान और बाकी की परिपक्व स्वास्थ्य जांच बद्ध यहाँ से ये पूरी की यान जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये पूर्ण पूर्ण परीक्षित संयोजित यान और तैयार LVM3 M4 रॉकेट आपने आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहाँ संपन्न किया जाता है। लॉन्च पैड पर खड़ा है ये। दरअसल ये यान पूर्ण LVM3 परीक्षित है। M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. LVM3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen. That's the spacecraft director आप देख पा रहे होंगे and associate यान spacecraft के director. यान से जुड़े हुए कुछ अभियंताएं तथा वैज्ञानिक आपके स्क्रीन पर। ये सारे अभियंताएं वैज्ञानिक लगातार नजर गड़ाए हुए हैं इन सारे आंकड़ों पर जो हमें यान से भी मिल रहा LVM3 है। is India's और largest and heaviest कुछ ही launch क्षणों में vehicle अब से ferrying Indian धीरे and धीरे जो एक international एक customer हिस्सा है satellites. इस यान का, उसके जो सारे निर्देशक होते हैं वो अपना जो अनुमोदन है वो दे देंगे और फिर अंत में launch vehicle is ready for the Chandrayaan 3 mission.
ये स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर थे और ये अब हम उड़ान मिशन से डायरेक्टर है। 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Mission Director Roger. स्पेसक्राफ्ट निर्देशक का आपने आवाज सुना। Range is ready for LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, आप सैटेलाइट TTC ने- डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। All necessary clearances are obtained for the launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft, and TTC, confirmed by respective mission executives, and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time, today the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Shar. और ये सफलतापूर्वक जो All stations to know. मिशन निर्देशक है उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया है। अब जाकर हम जी हाँ, यान अभी के आपने घोषणा प्रज्वलन के सुनी। लिए मिशन डायरेक्टर ने लगभग लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कुछ ही शुरू मिनट करने दूर का है। अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the आप launch देख vehicle. पा रहे होंगे ये एक व्यू है हमारे लॉन्च व्यू गैलरी से। close to the launch आप time, देख पा रहे होंगे control आज will be passed on काफी to the भीड़ onboard उमड़ी है computer. हमारे LVM3 M4 प्रमोशन मिशन के लिए। Timing व्यूअर्स confirmed, गैलरी दर्शकों से excellent full खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Centre Launch View Gallery for witnessing this historic moment Data of loggers are Chandrayaan on 3 at 7 and launch. Shatu stations. Copied. The countdown for LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission has lasted for 25 and a half hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank During scheduled at countdown, 1 PLO, the launch vehicle Minus stages are 16 serviced with propellants. Vehicle Director to Gas ALS bottles console. meant for stage Vehicle operations are Director charged, authorizes while the Earth automatic storable launch sequence propellant for the filling was LVM3 concluded M4 more than Chandrayaan 3 16 mission. hours ago. LSC The Roger. cryogenic propellants SDA servers activated. MC confirms data from SHAR-1 अभी and अभी SHAR-2. कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत Automatic है। launch इसका sequence मतलब initiated ऑनबोर्ड for कंप्यूटर LVM3 M4 पूरी launch. तरह स्वचालित हो चुका है। ALS in auto mode. We are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this Event mission. number 465. Request CGSS to confirm supply of GN2 to cryogenic. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike.
From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. 14 minutes. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the 4th instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan-3 has 2 predecessors
with destination moon as their mission objective. Chandrayaan 1, launched by PSLV C11 in October T25 2008, prime chain actuation in progress. included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM3 M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आकाश, थैंक यू फॉर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को Joining the प्रोपल्शन stream. मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह से चंद्रयान में मैन्यूवर when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing coefficient phase loading started. takes place. Flight coefficient loading complete. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness Pyro through and wall extensive battery ground mode. tests and simulation. Onboard computer in flight mode. तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सीक्वेंस जारी है। इस LVM3 दौरान सभी संचार अब तंत्रों अपने की स्वास्थ्य अंतिम जांच, पथ पर है। बैटरी एविएशन पूर्ण किया जा चुका है। सारी चीजें अब कुछ हो अंतिम चुकी है। गतिविधियों लॉन्च जैसे ऑनबोर्ड के कंप्यूटर लिए पर बस रियल टाइम प्रोग्राम लोड 3 करना, मिनट पायरो बचे लाइन हैं। को आर्म मोड आकाश में लाना, भारद्वाज, गैस टैंक्स नमस्कार, का कैसे हो अंतिम भाई? आवेशन। स्वागत है। थोड़े प्रॉब्लम थे इसलिए मैं लेट आया और थोड़ा। यह सभी कैसे हो घटनाएं जरा बताना। संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं।
आकाश भारद्वाज, जरा अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम अभी देख रहे हैं तो अब हम कैसे हो उड़ान से भैया? 3 मिनट की दूरी मैंने पर कहा हैं। था इसलिए आप आए, सॉरी फॉर दैट, पर थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, मेरा कुरियर आया था तो इसलिए मैं गया था। आप देख पा रहे होंगे LVM3 का ये जो शॉट है ये मुझे काफी पसंद आया, काफी खूबसूरत शॉट लगा है LVM3 का। तो आकाश भारद्वाज, हाय सर, मैं आपकी लाइव देख रहा हूँ, आपने बोला था देख प्रमोशन तथा तो आ गया। ओके, इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. ओके, प्रेशर देना पड़ता है, ये प्रेशर क्यों देना पड़ता है इसके ऊपर एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा, पहले ये फ्लाइट होने दो। 2 मिनट बचे हैं S200 के लगभग, प्रज्वलन 2 के मिनट बचे 108 हैं, सेकंड के पश्चात 33 मिनट हो L110 चुके जो हैं। कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित देखिए, चरण 2 है, मिनट बचे हैं, इसका शार्प। प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के हाय प्रज्वलन के मिस्टर पश्चात आकाश करीब बॉस 001। 137 सेकंड पर ओके, S200 हेलो बूस्टर्स को यान से आकाश पृथक कर दिया जाएगा। वडेरा, 1 मिनट और कुछ सेकंड्स की दूरी से हम प्रमोशन से पहले आप केम We are टाइम close to प्रॉब्लम, 1.5 minutes from the scheduled launch 1 time. मिनट और 30 सेकंड की दूरी पर पहले आप देखोगे प्रथम चरण में जो S200 बूस्टर्स लगे उनका प्रज्वलन किया जाएगा, और फिर लगभग सभी 108 दर्शकों को सेकंड ज्ञात पर है, जो यह हमारे एक L110 ऐतिहासिक स्टेज है मिशन जिसमें होने वाला 110 टन है। का प्रोपेलेंट भरा जाता है, पूरे लिक्विड भारतवर्ष लोडिंग की होती है, आंखें इसमें उसका हैं। प्रज्वलन किया जाएगा। सबसे प्रथम आप ये देख पा रहे होंगे लॉन्च व्यू गैलरी, जहां काफी यादगार भीड़ पल के उमड़ी लिए है यहाँ इस सब उपस्थित। LVM3 M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोशन देखने के लिए। लगभग -1 minute. 1 मिनट की दूरी पर हम प्रमोशन से 58। सर आप जरा दर्शक गण आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं मेरी वाणी कुछ देर के लिए रोकूंगा, तब आप दर्शक गण थोड़ा ध्यान देंगे ताकि -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 -33 open. seconds. दर्शक गण आप ध्यान देंगे। S200 बूस्टर जो साइड में उसके दाएं बाएं जो एक एक बूस्टर लगा रहता है उसका सबसे पहले प्रज्वलन किया जाएगा, जो 200 टन का प्रणोद उसमें भरा रहता है, जो काफी शक्तिशाली बूस्टर भी है भारत का। -20 seconds. उसके बाद 108 सेकंड पर L110 स्टेज का इग्निशन किया जाएगा -15. 15 सेकंड की दूरी पर, और ये पंछी जाने वाला है शायद। 10 सेकंड की दूरी पर मैं थोड़ा मेरी वाणी को रोकता हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. प्रज्वलन और ये भव्य उत्थापन GSLV रॉकेट का LVM3 M4 मिशन सीधे अपने अनुमानित पथ पर LVM3 अपने अनुमानित पथ का अनुकरण करते हुए S200 बूस्टर्स का प्रज्वलन के तत्पश्चात ये यान अवकाश में, और आप क्लियर व्यू देख पा रहे होंगे LVM3 का एक क्लियरेस्ट इमेज, और आप देख पा रहे होंगे ये इतना बड़ा भव्य रॉकेट 640 टन का ये प्रक्षेपण यान सीधे अवकाश में, और ये यान अपने कंपन के साथ यही सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान हसीनी थे, और इसका जो क्रायोजेनिक चरण है वो अपनी सफलता की कहानी आज खुद ही लिखने वाला है। दरअसल आप देख पा रहे होंगे S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का प्रज्वलन जारी है, और प्रज्वलन से 108 सेकंड बाद हम L110 स्टेज का इग्निशन करेंगे। दरअसल इसमें हम 0.452 का इनर्शियल वेलोसिटी का गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं इस प्रज्वलन के दौरान। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रमा के लिए सबसे बड़ी आप एक शुरुआत यूं कह लो LVM3 से हो चुकी है। वर्तमान में S200 बूस्टर्स का प्रज्वलन सामान्य है और निष्पादन करते हुए आगे बढ़ रहा है। S200 बूस्टर्स परफॉर्मेंस नॉर्मल इस समय, परफॉर्मेंस नॉर्मल इस समय LVM3 के S200 बूस्टर्स का सारे जो केंद्र है वो ट्रैक करते हुए ट्रैक वगैरह वो सब। 2.5 tons in each strap-on. दरअसल 2 tons of propellant being burnt each 200 second. टन का प्रोपेलेंट भरा जाता है, क्योंकि ये S200 है तो 200 टन का इसमें प्रोपेलेंट भरा जाता है, और इसमें प्रज्वलन का L110 स्टेज हैव बीन इग्नाइटेड। 110 सेकंड हमने इसमें व्यतीत किए, 108 सेकंड हमने इसमें व्यतीत किए। के शिवन सर जो है उनके चेहरे पर आप खुशी देख पा रहे होंगे। सफलतम रॉकेट का प्रमोशन
सतीश धवन अंतरिक्ष stage has केंद्र also से। commenced its operation. This stage और based on combination बूस्टर सेपरेशन, Stages are separated. बूस्टर्स का सेपरेशन of भी hyperbolic सामान्य जो हमारे Earth बूस्टर्स है storable S200 liquid बूस्टर्स propellant क्लोज लूप UH-25 CLG INT हो चुका है। CLG यानी कि क्लोज Now लूप the गाइडेंस, S200s have been INT मतलब इनिशिएशन हो चुका है। और कंग्रेचुलेशन सर, घटनाक्रम के अनुसार जय हिंद डाला है बाबू भाई कतार। इस यान बेसिकली से हमें S200 गुजराती नहीं आती, तो स्टर्बन बूस्टर्स अब जरा को हिंदी में या सफलतापूर्वक इंग्लिश पृथक में कर दिया गया अनुवाद है। कर सकते तो यह वास्तव काम में काफी बड़ी सेपरेशन बात होगी। मोटर्स की मदद से किया अब जाता है। फ्लाइट इवेंट्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे इस मिशन के इसके लिए। बाद L110 ये तरल फ्लाइट नोजल इवेंट पर सबसे पहले आधारित और विकास इंजन S200 के बूस्टर्स साथ का प्रज्वलन यह हुआ, जो चरण पहले दो सामान्य बूस्टर्स निष्पादन आते करता हैं, हुआ अपनी उसके बाद उद्दिष्ट कक्षा की ओर L110 बढ़ स्टेज रहा का है। इग्निशन, फिर सेपरेशन और फिर क्लोज लूप गाइडेंस का इनिशिएशन जो 137.6 सेकंड पर किया जा रहा है। अनुमानित पथ अवलौकिक पथ क्लोज का लूप फॉलो गाइडेंस करते के हुए एकदम अंतर्गत आप है। देख, आपने जैसा अभी देखा, Stage performance normal. अब पेलोड फेयरिंग जो उष्मा कवच जो 4 मीटर डायमीटर वाली ओजाइव शेप्ड फेयरिंग है, उसका अभी आप सेपरेशन देखोगे कुछ ही सेकंड्स में अभी बस ये सेपरेशन आने वाला है। और ये सेपरेशन Payload fairing सक्सेसफुल, separated. पेलोड फेयरिंग का सेपरेशन पेलोड सामान्य, फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है चंद्रयान यान 3 से, क्योंकि सीधे यान अब एटमॉस्फेयर में खुला हुआ। 114.8 किलोमीटर और जो की ऊंचाई L110 प्राप्त स्टेज है कर चुका उसका है। जो प्रज्वलन है वो फिलहाल तो जारी है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 अब सेकेंड होता है और इस दौरान इसका यह अगर आप करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रज्वलन काल देखें तो वो 200 सेकंड्स का होता है, जिसमें 220 seconds हम past the लगभग launch time. UDMH Current और altitude NTO4 is का जो फ्यूल है वो बंद करते हैं। ये 135 हाइपरगोलिक फ्यूल है, kilometers. इसमें इग्नाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, In the ये बस 200 मिक्स होने के seconds of बाद its स्वतः ही operation, जलते the हैं। L110 ये दरअसल stage दो carries the विकास rocket इंजन को up to जलाते हैं। 175.5 हमारे पास दरअसल kilometers इसमें altitude दो and विकास imparts a इंजन हैं। relative velocity of आप देख पा रहे होंगे 4.18 kilometers per second. लगभग 240 That is सेकंड हमने 250 245 सेकंड इस kilometers फ्लाइट में every हमने minute. व्यतीत किए हैं। अनुमानित पथ अवलौकिक पथ को फॉलो करते हुए एकदम उसके ऊपर चलते हुए, और अब कुछ ही क्षणों में LVM3 आप M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः ये सामान्य जितेंद्र निष्पादन सिंह करते और हुए हमारे इसरो के एक्स चेयरमैन इस समय इस आपके चरण में स्क्रीन कुल पर। 113 टन के तरल नोदक भरे दरअसल जाते अभी हैं। परफॉर्मेंस नॉर्मल है फिलहाल, तो जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था, जैसे कि बताया गया था, और जैसा अभी हमें जो तथा मिल रहा है UH-25 उसके रिजल्ट्स। आप स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ये ग्राफ्स ईंधन आपके के रूप स्क्रीन में पर प्रयोग किया जाता है इस एकदम चरण में। अनुमानित पथ अवलौकिक पथ को फॉलो करता हुआ, ये जो बिंदु के रूप में आप देख पा रहे हैं, ये बिंदु मतलब ये यान है, जो लाल लाइन है वो है प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्टरी, और ये जो पीछे येलो लाइन या ग्रीन लाइन है वो है अगला इसकी चरण फॉलोड ट्रेजेक्टरी। C25 का अब C25 यानी क्रायोजेनिक चरण का जो इग्निशन है वो ऑथराइज हो चुका है, यानी कि अब सेपरेशन के कुछ ही सेकंडों बाद जैसे इग्निशन किया जाएगा। ये शट ऑफ हो चुका है L110 स्टेज, और ये इग्निशन C25 ignition command. और ये कंफर्म, सफलतापूर्वक कंफर्मेशन मिल चुके हैं That's हमें। a piece of really good news that the third stage has इग्निशन started its कंफर्म हो operation. चुका है The और C25 सस्टेन भी हो stage चुका है, has यानी कि been एक्सेलरेशन ignited. इससे हमें मिल रहा है। कस जी हाँ, यानी एक बहुत ही कि जटिल प्रक्रिया बेसिकली होती ये है क्रायो क्रायोजेनिक इंजन का स्टेज है ignition, हमारा। और कस इसके बेसिकली प्रज्वलन के GSLV साथ मार्क ही 2 में होता है, तालियों की मार्क गड़गड़ाहट 3 में से गूंज उठा C25 है स्टेज होता मिशन है। नियंत्रण कक्ष। ये दोनों चरणों में सबसे बड़ी बात है। और इसमें तृतीय एक चरण बात यह है कि GSLV मार्क 2 का जो क्रायोजेनिक इंजन है वो वर्तमान में अंदर थोड़ा रहता है, अंदर प्रणव धसा हुआ उत्पन्न रहता है। कर इसका रहा ये जो इंजन है वो पूर्णतः बाहर निकला हुआ सामान्य रहता सभी है। तंत्र आप पूर्णतः देख पा रहे हैं कि सामान्य है। लॉन्च व्यू गैलरी में ये अनेक जो लोग बाहर से आए हैं उनके कुछ 118 चित्र, kilonewtons thrust in vacuum is what the एकदम stage सफल develops प्रमोशन with सतीश its धवन से। आप देख पा रहे हैं अभी तक कोई भी 28.6 डिविएशन combination नहीं मिला, हमें डिविएशन नहीं मिला, ये काफी बड़ी liquid बात है। hydrogen and liquid अनुमानित पथ oxygen. अपने अवलौकिक पथ को फॉलो करता हुआ Present altitude is लगभग अगर हम बात करें 754-760 की रेंज है, 200 का अल्टीट्यूड है, 107 का और यह अजीमुथ अंतिम है। चरण है टाइम इस की यान बात का करें तो C25 376 78 सेकंड हमने अभी फ्लाइट में व्यतीत किए, और ये लगभग काफी लंबे समय तक अभी चलने वाला है, क्योंकि अभी सीधा 954 सेकंड पर जाकर बंद होने वाला है। ये जो हमारा इंजन है वो ये दरअसल 307 सेकंड पर प्रज्वलित होता है और 354 सेकंड पर इसका जो शट ऑफ है उसकी कमांड दी जाती है। ऐसा एक्सपेक्टेड, ऐसा अनुमानित है। आइए अगर आप मैं आपको बताऊं तो इसके कुछ थोड़े स्पेसिफिकेशंस भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये ग्राउंड ट्रेस आपके स्क्रीन पर जो भी यही दिखाता हुआ कि अनुमानित पथ अवलौकिक पथ का फॉलो, इसका ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए of 210 kilometers. जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है उसका जो लेंथ है
वो लगभग 13.5 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है। ये इसमें प्रोपेलेंट के रूप में ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट इस्तेमाल करता है, LH2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लॉक्स यानी लिक्विड ऑक्सीजन। दरअसल इसमें प्रोपेलेंट मास 28.6 टन भरा जाता है, और अगर हम इसकी बात करें इसके पूरे वजन की, तो वो लगभग 30 टन तक छू जाता है। और अगर आप इसके ऑर्बिट के बारे में बात करें, LVM3 M4 मिशन के ऑर्बिट के बारे में, तो वो लगभग 36,500 किलोमीटर का ऑर्बिट होगा, प्लस माइनस 500 किलोमीटर इसकी एपोजी होगी। और अगर हम पेरिजी की बात करें तो 170 किलोमीटर की पेरिजी, प्लस माइनस 3.5 किलोमीटर का इसका इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव ऑर्बिटल प्लेन से होगा, वो होगा लगभग 21.3 डिग्री का झुकाव। और ये समय लैंडर के कुछ पेलोड्स आप देख पा रहे होंगे, रंभा LP यानी लैंगबेर प्रोब वगैरह, वो India's सब prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. चंद्रयान 3 अपनी सफलता की The propulsion कहानी खुद ही module लिख रहा provides है, propulsion जैसे कि आप for देख पा रहे earthbound होंगे। maneuvers, दरअसल अगर मैं आप translunar इसको injection बताते चलूं and कि इस moonbound मिशन का orbits. सीक्वेंस, तो सबसे पहले It इसका also प्री has a लॉन्च payload फेज है to study the जो हो चुका spectral है, and और जब polarimetric measurements और इसका of लॉन्च Earth and lunar और orbit. एसेंट फेज जो शुरू The है इस abbreviated समय, name of the payload इस is लॉन्च और SHAPE. एसेंट फेज शुरू खत्म होने के बाद अर्थ बाउंड मैन्यूवर फेज शुरू होगा, जिसमें जो इसका Among the प्रोपल्शन payloads मॉड्यूल of the है lander वो खुद का module, the इंजन का following are प्रयोग कर included. A landway इसका जो probe called इंजेक्शन है वो Brahma एक to measure the near surface plasma लूनर density, that is the इंजेक्शन ऑर्बिट density में of किया जाएगा ions and electrons, and its या changes एक with उसके time. पाथ पर किया जाएगा। तो The second इसमें payload इसे is हम अर्थ Chandra's बाउंड मैन्यूवर कहते हैं। surface और फिर इस thermophysical ट्रांसफर experiment or ट्रैजेक्टरी CHASE फेज में या इस to लूनर measure thermal ट्रांसफर properties ऑर्बिट of में lunar जो हमें ये surface near टाइम मिलता polar है, regions. इस टाइम को हम To measure दरअसल the seismicity ट्रांसफर around the ट्रैजेक्टरी landing फेज site कहते हैं। and delineating और इसके the बाद structure of लूनर the lunar ऑर्बिट crust इंसर्शन and फेज mantle, यानी payload LOI आता है, और फिर मून बाउंड ILSA मैन्यूवर is there. फेज जिसमें इस The ऑर्बिट को rover हम after छोटा its करते हैं, descent will फिर further PM यानी scientific जो study हमारा प्रोपल्शन and मॉड्यूल है its उसको moon और लूनर payloads मॉड्यूल को उसका for better पृथक्करण अलग understanding कर of देते हैं। chemical and इसके बाद जो mineralogical हमारा composition of lunar surface, लूनर मॉड्यूल है या जो ellipse or laser लैंडर है induced विक्रम, breakdown. उसे किया गया है। जी और हाँ, फिर लैंडर जो मॉड्यूल अंत में में 3 लैंडिंग पेलोड फेज हैं, शुरू हो जाती है, रोवर में जिसको 2 फेज 8 और के रूप में propulsion क्रमांकित मॉड्यूल में किया गया 1 है। पेलोड उसके बाद भेजा गया नॉर्मल है। फेज फॉर लैंडर एंड रोवर, जिसमें वो खुद ब खुद अपने चंद्रयान कार्य 3 करते के हैं, जिसको स्वदेशी फेज लैंडर 9 के और रूप में रोवर क्रमांकित किया में गया है। नियमित भारों का और इस्तेमाल फिर किया जा रहा मून है। सेंट्रिक यह नॉर्मल ऑर्बिट अंतर्ग्रही फेज यानी मिशन के लिए भी जो हमारा आवश्यक तकनीकों का प्रोपल्शन प्रदर्शन मॉड्यूल है करेंगे। वो खुद को लैंडर के सर्कुलराइज पास करेगा यह क्षमता है कि 100 वह किलोमीटर के एक चंद्रमा सर्कुलर की ऑर्बिट में। ऊबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी और फिर सावधानी से शेप उतर पेलोड जो सकेगा इसमें और लगा रोवर गया को है बाहर प्रोपल्शन लाने के मॉड्यूल लिए में, वो काम करना और शुरू संचार कर सुविधाएं देगा। प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। दरअसल अगर हम इसकी संचार सेवाओं की बात चंद्रयान 3 करें के तो लैंडर और चंद्रयान रोवर में का कुल विक्रम 6 लैंडर जो है निर्धार हैं। वो सीधे उसके रेडियो एस्ट्रोनॉमी चंद्रयान 2 के moonbound ऑर्बिटर से hypersensitive ionosphere and संचार atmosphere, सुविधाएं प्रदान जिसे करेगा, शॉर्ट में उसके साथ ही कहा साथ इस जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संचार सुविधाएं यह चंद्रमा प्रदान की सतह करेगा। के पास प्लाज्मा ये के सीधा घनत्व तथा संचार समय के साथ हमारे बदलाव का मापन करेगा। ग्राउंड से नहीं करने वाला, इसके ये बाद बड़ी बात चंद्र है इसमें। सरफेस और जो हमारा thermophysical लैंडर है, experiment, जो विक्रम चंद्रमा के ध्रुवीय विक्रम सतह लैंडर है, के उसके अंदर के आसपास जो की रोवर thermal है, properties वो का रोवर मापन करेगा। सीधा लैंडर से ही संपर्क में रहेगा, वो Instrument for इनडायरेक्टली linear seismic हमारे activity, संपर्क में रहेगा, landing डायरेक्टली site हमारे के संपर्क आसपास में के नहीं रहेगा क्षेत्र वो। में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रदर्शन अल्फा सामान्य पार्टिकल C25 एक्स-रे चरण का स्पेक्ट्रोस्कोप ये तालियों की इस्तेमाल गूंज किया जा रहा सतीश है। धवन में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी ये एक एनिमेशन आप देख पा रहे होंगे नियर C25 इंफ्रारेड किरणों स्टेज का, विश्लेषण वास्तव में जो अभी दूसरे घटित जीवन है। सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। सफल प्रक्षेपण सतीश धवन से LVM3 M4 चंद्रयान 3 मिशन का। आइए अब हम आपको थोड़ा लैंडर के पेलोड्स के बारे में बता देते हैं। लैंडर में कुल 3 पेलोड्स है जो भारत के खुद के हैं, जिसमें रंभा LP यानी लैंगोमेर प्रोब आ जाता है। अब हम प्रमोशन से रंभा यानी हमारा वो पेलोड है जो सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर आयन की डेंसिटी वगैरह चेक करेगा, 91 किलोमीटर चांद की सरफेस मतलब उसके एटमॉस्फेयर में। चैस्टे जो है दूसरा पेलोड, वो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद ILSA एक पेलोड है जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है।
आप देख पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेस During इस the last समय phase of काफी landing, the सामान्य module चल will रहा है। have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second अब from a height हम of 3 meters. कुछ ही मिनटों The की दूरी lander legs और are designed जब to be robust इस enough हमारे to drive the impact. The यान को, cameras इस are tuned to स्पेसक्राफ्ट take को pictures अंतरिक्ष में ahead of the प्रक्षेपित किया landing जाएगा, and केवल और enable केवल एक intelligent 200 सेकंड की decision-making दूरी for होगी, choice of क्योंकि best location to 700 land, लगभग avoiding 750 craters सेकंड and फ्लाइट में boulders व्यतीत on हो the चुके हैं surface. और 954वें सेकंड पर The successive जो pictures will हमारा also कट ऑफ enable है the craft C-25 का to वो होना determine है। its उसके बाद इस horizontal सैटेलाइट का सेपरेशन, and vertical स्पेसक्राफ्ट का velocity सेपरेशन किया in जाएगा। real time. तो कुछ सेकंड की दूरी पर अब हम सेपरेशन से Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. सो आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में ये एक एनिमेशन हमोचन से के रूप में 817 आपको सेकंड की दिख रहा दूरी है। पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। दरअसल इस यान का अंतिम इंजन है ये और तृतीय उचित इंजन या अभिवृत्ति तृतीय प्राप्त चरण। कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। दरअसल उचित चंद्रयान 3 को ऊंचाई, LVM3 M4 द्वारा ऑर्बिट, एलिप्टिकल पार्किंग कक्षा ऑर्बिट और में सारी चीजों को देख, लॉन्च करने के पश्चात वेलोसिटी को 170 देख, किलोमीटर की पेरिजी फिर ये पर हमारा क्रमशः C-25 5 बार चरण मैनेवरिंग कमांड दिया जाएगा। उपग्रह को छोड़ देगा उसके पांचवी कार्य के बार में लिए। यह पृथ्वी और ये से चंद्रमा की इस ओर समय प्रस्थान प्रदर्शन करेगा, सामान्य जिसे हम C-25 यूनिट चरण का। ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैनेवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 जी हाँ, लगभग को हम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया 890 शुरू की सेकंड जाएगी। फ्लाइट में हमने व्यतीत किए हैं और लगभग अब 900 ही सेकंड आप पकड़ लो, क्योंकि 895, 96, 97, 99 हो चुका है। 900 सेकंड आप पकड़ लो। 54 सेकंड की दूरी पर अब और जब C-25 चरण को बंद यानी शट ऑफ कर दिया जाएगा, लगभग 54 सेकंड की दूरी और जब इसे C-25 चरण को बंद कर दिया यानी शट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेस काफी सामान्य, इस समय प्रदर्शन भी सामान्य, इंक्लिनेशन भी आ चुका है, एपोजी भी मिल चुकी है, सामान्य सारी चीजें। अब जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण अपेक्षित इंक्लिनेशन यानी अभिवृत्ति को प्रदान कर उद्दिष्ट कक्षा इसे की ओर ले जा रहा है। अंतरिक्ष में डाल दिया जाएगा। उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृत्ति प्राप्त होते ही चंद्रयान और ये 3 शट ऑफ के हम काफी नजदीक आ चुके हैं। प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cut off. और ये C-25 चरण का जो थ्रस्ट है वो कट ऑफ कर दिया गया है Is achieved. और ऑर्बिटल कंडीशंस हैव बीन अचीव्ड। चंद्रयान अभी कुछ ही क्षणों में चंद्रयान 3 का प्रतिकरण होने जा रहे हैं। Satellite separated. सेपरेटेड चंद्रयान 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपण तथा प्रतिकरण ऑर्बिट पर C-25 चरण से। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission चंद्रयान 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक पृथक्करण तथा अंतरिक्षेपण 36,500 किलोमीटर की बाय 170 किलोमीटर की कक्षा में Satellite injection conditions. LVM3 M4 mission is successful.
जी हाँ, हम सारे लोग इसी Launch चीज has के also लिए added a feather in the cap of रुके थे LVM3 जब rocket. हमारा You can LVM3 watch यानी the jubilant GSLV congratulatory रॉकेट gestures जब एक ऐसी जुबलियंट of मूवमेंट ISRO क्रिएट करे scientists in the Mission जब Control Center. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जी हाँ, चंद्रयान को प्रदर्शित करे। सफलतापूर्वक दरअसल ये अंतरिक्षेपित कर एक दिया गया है, महत्वपूर्ण लेकिन क्षण है चंद्रयान हमारे 3 की भारत के यात्रा लिए। अभी जारी है। इसरो के अध्यक्ष है सोमनाथ आपके स्क्रीन पर इस मिशन समय के और बारे में हम अन्य अध्यक्ष जो हमारे महोदय से सुनेंगे और हम डायरेक्टर आपसे से आज्ञा लेते अभियंताएं हैं। हैं वो इस समय आपके स्क्रीन पर We sign out. सभी के Next चेहरों पर is बस addressed by बस खुशी Secretary TOS के Chairman शिवन ISRO. जितेंद्र सिंह सर के चेहरे पर खुशी है, शिवन सर फिर हमारे जो किरण सर है उनके चेहरे पर खुशी है और ये गोल्डन LVM3 इस समय दिखाते हुए LVM3 का ये खूबसूरत लुक अब तक इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा और आप देख पा रहे होंगे कुछ अन्य लोग ये हमारे के शिवन सर इसरो के एक्स चेयरमैन थे पहले, किरण कुमार ये VSSC के कैमराज है कुछ इसमें से और अब अनुमोदन देंगे हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ चेयरमैन चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी सफलता के बाद। Congratulations guys, congratulations. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly, actually, sir. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch.
Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence.
And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Centre. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM3, the successful mission. With this, the success rate of LVM3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work
of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Centre, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM3 M4 and Chandrayaan 3 mission. So, once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of C-55 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan 3 is also ready for the mission.
And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan 3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come. जैसे कि आप देख रहे थे, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ वैसे हमारे चंद्रयान 3 का मून मिशन ऑर्बिट में उसके, और इसके बाद अब जो हमारा चंद्रयान 3 है वो खुद को प्रोपेल करेगा। उसके बाद वो उसके कक्षा में जाने का प्रयास करेगा, उसके चंद्रमा की कक्षा में जाने का प्रयास करेगा। वैसे मैं अब यहाँ टीवी देख रहा था और ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ यार। एनीवेज, टीवी पर कौन कौन देख रहा था जरा मुझे बताना, लाइव चैट में जरा बताना टीवी पर कौन कौन देख रहा था। वैसे मैं मेरी खुद की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। अब टीवी पर कौन कौन देख रहे थे कमेंट में बताओ यार, लाइव चैट में बताओ। वैसे लाइव चैट काफ़ी सन्नाटे से भरा है। हम फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा लॉन्च जब हुआ वो वाला पार्ट। 28 टन का क्रायो ईंधन, पूरी सुरक्षा तथा सावधान। इसमें दिशा नियंत्रण। This stage will add लॉन्च कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए क्या है यहाँ सब उपस्थित। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 40 सेकंड, MOV 79. 35 सेकंड, -30 30 सेकंड, Real-time programs activated. -25 सेकंड, L110 VSPP open. -20 seconds, -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इग्निशन। और ये भव्य उत्थापन GSLV मार्क 3 रॉकेट का LVM3 रॉकेट अपने अनुमानित पथ पर LVM3 M4 सीधे अपने आकाश में अपने अनुमानित पथ पर आप देख पा रहे हैं। सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं।
और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। It looks beautiful, like a lady rising. Oh, Regi, thank you very much for the comment. It was a beautiful comment. Anyways, thank you for the beautiful comment you made recently. का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. By the way, L110 stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. did you like this? That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और
इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 Basically, this is the start of the journey. Now the temperatures are rising. Less than सामान्य सभी तंत्र 42 days are remaining for the soft landing, which will be 180 attempting by a kilonewtons Vikram thrust lander. in vacuum is what the stage develops. So with its less than 8.6 tons propellant combination 42 days are of remaining. liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is close. So it's just a start. Real program will begin तृतीय now. और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHAST to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा।
इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM3 M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second.
जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM3 M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Other than the sun. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O